Okay, so let's continue our discussion on the accounting for partnership firm fundamentals. In the previous class, we have started partners capital account. Now, how many type of capital accounts can be possible? Two or three. How many classification we saw? Two. One is fixed, one is capital. If partners capital account are fixed, if partners capital account are fixed, then how many accounts we prepare? Capital and current. Capital and current. But if it is fluctuating, only one. And which is that? Only capital account. Only capital account. We just started the problems, and today's class you'll see more problems on the same. So last was question number 24. Now continuing further. Ashish and Akash are partners sharing profit in the ratio 3:2. Their capital account had a credit balance of 5 lakh and 6 lakh respectively. On 31st March, after debit of drawing during the year of 1.5 lakh and 1 lakh respectively. Net profit for the year ended 31st March was 5 lakhs. Interest on capital is to be allowed at 10%. Pass journal entry for interest on capital and prepare P&L appropriation account. Before I start the solution, go through the question once again. So now that capital account had a credit balance of 5. First, tell me the journal entry. First, tell me the journal entry, everyone. Just a second, just a second. So the journal entry is interest on capital to Ashish capital account to Akash capital account. This is the journal entry. Now the amounts. How much is the Ashish capital? 5 lakhs. Will I pay interest on 5 lakhs? No. The answer is no. The answer is no. क्यों भैया जब कैपिटल 5 lakhs है तो उस पे इंटरेस्ट भरना पड़ेगा. The answer is no because ये जो 5 lakhs का है this is after drawings of 1.5 lakh. तो इसका एक्चुअल कैपिटल कितना है? 6,50,000. I am repeating again. I am repeating again. ये जो फर्स्ट पार्टनर है आशीष उसका जो 5 लाख का कैपिटल है दैट इज आफ्टर ड्रॉइंग्स ऑफ 1.5 लाख. तो इसमें इसका एक्चुअल कैपिटल है 6.5 lakhs. So 6.5 lakh into 10%, 65,000. ये हो गया आशीष का. Then Akash, will I charge interest? Will I give interest on 6 lakhs? No. 7 lakh. क्योंकि 6 lakh after drawings है. तो drawings के पहले इसका कैपिटल कितना था? 7 lakh. So 7 lakhs पे 10%. Add both. 1,35,000. 1,35,000. और इन्होंने P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट पूछा. मैं नहीं बना रहा. क्यों? क्योंकि एक ही प्रॉफिट है 5 लाख एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और कोई अप्रोप्रिएशन ही नहीं है. तो हमने एक प्रॉब्लम लास्ट क्लास में भी किया था तो आई फील नॉट वर्थ डूइंग इट. खाली ये जर्नल एंट्री कॉपी कर लो. एक और नेक्स्ट एंट्री क्या होगी? P&L appropriation to interest on capital 1,35,000.
Can I continue? Moving forward, problem number 26. Now, ईशान आपका है क्लास के बाद फोन देख ही जाना कैन टेक इट आफ्टर 3 days एक बार अलाउ कर दिया तो सबके ऐसे फोन बीच बीच में बजते रहेंगे So Naresh and Sukesh are partners with capital 3 lakhs each as on 31st March. Naresh had withdrawn 50,000 against capital on 1st October and rupees 1 lakh drawings against profit. If you remember, last class I explained you two types of drawings. Drawings against capital and drawings against profit. Drawings against capital क्या होता है मैंने बिजनेस में पैसा डाला है वो पैसा मैं निकाल रहा हूँ दैट इज इंटरेस्ट अगेंस्ट कैपिटल. ड्रॉइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट क्या होता है मैंने बिजनेस में पैसा डाला उससे आई हैव अर्न्ड प्रॉफिट्स एंड वो प्रॉफिट को मैं विड्रॉ कर रहा हूँ. तो ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल एंड ड्रॉइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट ऑन 1st October and rupees 1 lakh drawings against profit. Sukesh also had drawings of 1 lakh. अभी भैया सुकेश का दिया ही नहीं है कि इसने ड्रॉइंग्स जो किया है 1 लाख का वो प्रॉफिट से किया है या कैपिटल से. सो व्हाट शुड वी अज्यूम? सेकेंड पार्टनर सुकेश है. सुकेश ने भी 1 लाख विड्रॉ किया है. नाउ क्वेश्चन में ये क्लैरिटी नहीं है कि जो उसने 1 लाख निकाला है वो ड्रॉइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट है या ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल है. If the question is silent, you have to assume drawings are from profits. क्वेश्चन में कोई इनपुट नहीं दिया हुआ है तो हम क्या अज्यूम करेंगे? ड्रॉइंग्स इज फ्रॉम प्रॉफिट्स. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% per annum. Net profit for the year is 2 lakh which is yet to be distributed. Pass the journal entry for interest on capital. जर्नल एंट्री पास कर करके थक गए. सो द एंट्री अगेन विल बी सेम. व्हाट इज द एंट्री? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू नरेश कैपिटल टू सुकेश कैपिटल. एंड नेक्स्ट एंट्री क्या होगी? P&L appropriation to interest on capital. Now I want you guys to calculate the interest on capital for N. Let me see who gives the first answer. ट्राई करो. एवरी प्रॉब्लम मैं करके दूंगा तो कब सीखोगे? फॉर नरेश प्लीज. किसने बोला? हाउ? 3 lakh plus 50,000, 3 lakh 50,000 with drawings. हाँ 3 lakh 50,000. 3 lakh 50,000 and 1 lakh is 1 lakh उसमें दिया फिर से. And ये लोग कमेंट 1st October 6/12 and 8th. ये 1 लाख का कोई रेलेवेंस है ही नहीं. 450,000 into 10% into 6/12. ड्रॉइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट है ना. हाउ 32,500? Because till October 1st, his capital was 3 lakh 50. वेरी गुड. हाँ 3 lakh 50,000 into 10% into 6/12. परफेक्ट. After October, like 6 months remaining, so that time the capital was 3 lakh. So 3 lakh into 10% into 6/12. वेरी गुड. सो व्हाट इज हैपेन? नरेश का कैपिटल एंड ऑफ द ईयर 3 lakhs है. एंड ऑफ द ईयर 3 lakhs है एंड ही हैज विथड्रॉन 50,000 अगेंस्ट कैपिटल. सो अभी बिगिनिंग नरेश का he had a capital of 3.5 lakh on which he'll get 10% for how many months? 6 months. क्योंकि 1st October उसने 50,000 विड्रॉ किया एंड बाकी 3 लाख पे 10% फॉर 6 months. So how much is this?
17,500. 17,500 and here 15,000. 15,000. तो टोटल होता है 32,500. But भैया, let's go to previous question now. Let's go to previous question now. Previous question जो इन्होंने drawings दिया है, this is drawings out of capital या drawings out of profit? Capital. Drawings out of profit. क्यों? कुछ भी मेंशन नहीं है. We have assumed drawings out of profit. तो वो भी हमने ऐड किया. Yes or no? तो इस प्रॉब्लम में क्यों नहीं? इस प्रॉब्लम में भैया आपने ड्राइंग्स आउट ऑफ क्या बोलते हैं कैपिटल ही ऐड किया. आपको ड्राइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट भी ऐड करना चाहिए था. तो ये पूरा कैलकुलेशन गलत है. इंटेंशनली आपको रॉन्ग करवाया ताकि यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट बेटर. सो नरेश का कैपिटल 3 लाख था एंड वो 3 लाख का कैपिटल दो ड्राइंग्स के बाद था. एक था 50,000 वाला ड्राइंग्स, एक था 1 लाख वाला ड्राइंग्स. तो उसका एक्चुअल कैपिटल कितना था? 4,50,000. 4,50,000 into 10% into 6/12. This is 22,500. Now, नरेश का कैपिटल 4.5 लाख था, बट 1 अक्टूबर उसने कैपिटल ही निकाल दिया बुक से, तो उसका कैपिटल कम हो गया. अभी जब उसने 50,000 विड्रॉ किया तो उसको 4 लाख पे इंटरेस्ट मिलेगा. 10% into 6/12. So this is 20,000. Add both. 42,500. 42,500. So I'll repeat again. मैंने क्या किया? नरेश का कैपिटल 3 लाख था आफ्टर 2 ड्राइंग्स. एक ड्राइंग्स था 50,000 का जो कैपिटल से निकाला, एक ड्राइंग्स था 1 लाख जो प्रॉफिट से निकाला. दोनों को ऐड कर दिया, 4.5 लाख हुआ. वो 6 मंथ्स के लिए था. आफ्टर 6 मंथ्स उसने क्या किया? 50,000 और विड्रॉ कर लिया कैपिटल से. तो उसका कैपिटल 4.5 लाख से 4 लाख हो गया. सो नाउ इट इज 42,500. ये हुआ नरेश का. नाउ नेक्स्ट पार्टनर का इंटरेस्ट कैलकुलेट करके बोलो. 40,000. सुकेश 40,000. वेरी गुड. 3 लाख का कैपिटल था आफ्टर 1 लाख ऑफ ड्राइंग्स. Yes or no? तो वो 1 लाख ऐड करेंगे तो 4 लाख हो जाएगा. 4 लाख पे 10%. 40,000. So total is 82,500. Total is 82,500. And next entry 82,500. Yes, come on, copy quickly. Yes, can I continue? Yes, sir. Now, problem number 27. On 1st April, Jay and Vijay entered into partnership for supplying laboratory equipment to government school situated in remote and backward area. They contributed capital of 80,000 and 50,000 respectively and agreed to share the profit in the ratio 3:2. Partnership did provide interest on capital is 9% and firm का profit था 7,800. Show your calculations clearly. कौन सा calculation दिखाऊं? Interest on capital. Interest on capital. So now they did not ask me to pass entries. They asked me to show the calculation.
So interest on capital, Jay, how much? 80,000. On 80,000, what is the rate of interest? That is 80,000 into 9%. 7,200. 7,200. Yeah. Vijay. 4,500. Vijay, it is 50,000 into 9%. 4,500. But I'll not give them this amount. जय का 7,200 होता है, विजय का 4,500 होता है, बट मैं उनको ये पैसा नहीं दूंगा क्योंकि उतना प्रॉफिट ही नहीं है. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एन अप्रोप्रिएशन. अगर प्रॉफिट हुआ तो अप्रोप्रिएशन करेंगे. प्रॉफिट ही नहीं है भैया इतना, तो भैया ये हमने प्रीवियस प्रॉब्लम में क्यों चेक नहीं किया? क्योंकि प्रीवियस प्रॉब्लम में प्रॉफिट था. लेट्स चेक कपल ऑफ प्रॉब्लम. लास्ट प्रॉब्लम नेट प्रॉफिट कितना था? 2 लाख. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चल गया. उसके पहले वाला प्रॉब्लम नेट प्रॉफिट 5 लाख. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 135. तो एडिक्वेट प्रॉफिट था हमारे पास. जब हमारे पास प्रॉफिट है तो हम क्यों नहीं देंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? बट इन दिस सिनेरियो अपने पास तो प्रॉफिट ही नहीं है, क्योंकि इफ आई ऐड बोथ 11,700, बट प्रॉफिट कितना है? पॉसिबल है देना? नहीं. नाउ अभी व्हाट इज द सोल्यूशन, व्हाट इज द रेमेडी? थोड़े बच्चे बोलते हैं भैया प्रॉफिट नहीं है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ही नहीं देते. सब एक सेकेंड ऑल्टरनेटिव्स, फिर आप सोचो थोड़ा कि थोड़े बच्चे बोलते हैं भैया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वैसे भी अपने पास एडिक्वेट प्रॉफिट नहीं है, देते ही नहीं है भैया. बेस्ट सबसे इजी सोल्यूशन, क्योंकि कोई एंट्री पास नहीं करनी पड़ेगी ना उनको. सेकेंड सोल्यूशन, भैया प्रॉफिट है 7,800, लेट्स गिव इन द रेशियो 3:2. 7,800 का प्रॉफिट है, हमारे पास पैसा तो है नहीं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने का, तो ये प्रॉफिट को 3:2 रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं. नाउ एनीवन हैव एनी अदर थॉट्स? अभी आप बोलो. Divide the profit in capital. 80,000 is to 50,000. 8:5 ratio. 8:5. Coincidentally, you will get the right answer, but that's not the right approach. इस प्रॉब्लम में coincidentally you will get right, but वो right approach नहीं है. 11,700 minus 7,800 जो आंसर है वो उसको 3:2. उतना तो पैसा है नहीं, उसको डिवाइड करके क्या करेंगे? मेरा क्वेश्चन पहले समझ में आया क्या आप लोगों को, या सब बोल रहे हैं अच्छा 2 मिनट ब्रेक? आई रिपीट माई क्वेश्चन अगेन. भैया प्रॉफिट है अपने पास 7,800 का, अप्रोप्रिएशन आ रहा है 11,700, क्लियरली इंडिकेटिंग एडिक्वेट प्रॉफिट नहीं है अप्रोप्रिएट करने के लिए. तो अभी करना क्या? हाँ, करना ही नहीं. तो वेरी सिंपल, 7,800 का प्रॉफिट है, यू हैव टू डिस्ट्रीब्यूट बिटवीन जय एंड विजय. 3:2. नहीं 80,000. नहीं, 8:5. इन दिस रेशियो. तो भैया ये रेशियो 7,200 एंड 4,500, ये 8:5 रेशियो ही है भैया. करके चेक कर लो, मैथ्स स्टूडेंट चेक कर लो एक बार. 7,200 and 4,500 3:2 रेशियो ही है. नहीं है या नहीं? भैया आप बोल रहे हो तो होगा. ये 3:2 रेशियो में है. Sir, 8:5. 8:5 ये कैपिटल रेशियो में है. ये क्या? तो भैया 8:5 इन्होंने बोला ही था. आई शो यू कि ये कोइंसिडेंटली कैसे राइट है. सो पहले ये सम सॉल्व कर देता हूं. सो 7,800 इंटू, कौन बोला? नहीं, 7,200 डिवाइड बाई 11,700. एंड विजय 7,800 इंटू 4,500 डिवाइड बाई 11,700.
basically in the ratio 7,200 is to 4,500 या in a ratio 8 is to 5 in the ratio 8 is to 5 please split करके बोलो कैलकुलेटर रखना पड़ता है 8 is to 5 रेशियो में स्प्लिट करके बोलो सब 4 4,800 4,800 एंड बाकी का जो भी बचा 3,000 तो भैया सीधा सीधा आप हमको 8 is to 5 रेशियो में करवा देते ना इतना कॉम्प्लेक्स क्यों एग्जाम्पल ये प्रॉब्लम इधर खत्म हो गया बट अपने मैंने डे 1 भी बोला था अपने को प्रॉब्लम नहीं कॉन्सेप्ट समझना है सो आई रिपीट अगेन लेट्स अज्यूम एक एक्स्ट्रा असम्पशन मैं ऐड कर रहा हूं इस प्रॉब्लम में assume Vijay gets a salary of 1,000. Assume इस क्वेश्चन में मैं एक्स्ट्रा क्या ऐड कर रहा हूं कि विजय को सैलरी भी मिल रहा है 1,000 रुपीज का नाउ जय को कितना मिलेगा 7,200 ओनली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट विजय को कितना मिलेगा 4,500 उसको मिल रहा था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और 1,000 मिल रहा था उसको सैलरी टोटल कितना 5,500 एवरीवन नाउ अगर मेरे पास प्रॉफिट है 7,800 का ही अगर मेरे पास प्रॉफिट है 7,800 का ही नाउ विल आई डिस्ट्रीब्यूट इन द रेशियो 8 is to 5 नो कितना लायबिलिटी है जय एंड विजय का 7,200 is to 5,500 ये रेशियो 8 is to 5 नहीं है ये रेशियो 8 is to 5 नहीं है तो भैया इस प्रॉब्लम में कोइंसिडेंटली कैसे राइट हो गया क्योंकि एक ही अप्रोप्रिएशन थोड़ा टफ होगा समझने के लिए एवरीवन प्लीज ट्राई टू अप्रिशिएट इस प्रॉब्लम में एक ही अप्रोप्रिएशन है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो आप 8 is to 5 रेशियो भी करके आपने स्प्लिट किया तो आपका आंसर आ जाएगा बट अगर मैंने इधर क्या किया एक और अप्रोप्रिएशन ऐड कर दिया सैलरी अगर मैं एक और अप्रोप्रिएशन ऐड करता हूं तो 8 is to 5 रेशियो नहीं आएगा एवरीवन यू आर एबल टू फॉलो थोड़ा भारी कॉन्सेप्ट है बट एनीवन वांट्स मी टू रिपीट अगेन कि भैया एक और बार फिर से बोल दो नाउ आपको ये फर्स्ट पार्ट समझ में आया नाउ सेकेंड पार्ट में मैं बोल रहा हूं कि पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो मिलेगा साथ ही साथ सैलरी भी मिलेगी तो एंड सैलरी एक ही पार्टनर को मिल रहा है विजय को तो जय को तो 7,200 जो पहले आया वही मिलेगा विजय को 5,500 मिलेगा तो अभी मेरा प्रॉफिट कितना है 7,800 ही है बट मैं 8 is to 5 रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूं क्या नहीं क्योंकि मेरे को जय को देना है 7,200 विजय को देना है 5,500 तो यही रेशियो में मैं प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करूंगा But salary is charged against. कब से सैलरी टू पार्टनर चार्ज है अज्यूम विजय सैलरी विजय पार्टनर है क्या हुआ ठीक है एवरीवन राइट इट क्विकली
Can we continue? Yes. Now, we are moving to the next set of problem where we have to calculate the opening capital. Where we have to calculate the opening capital. ये वाला part थोड़ा सा tough है, थोड़ा सा tricky है. But before we do that, I want to explain you a very simple and easy concept. So let's say, for example, opening capital. I am starting with opening capital and I want to find closing capital. ये मेरा end objective है. Now I'll tell each item. You guys tell me add करना है या subtract. Simple. Salary. Salary partner को मिलेगा तो उसका capital increase होगा. So we will add. Drawings. क्या? Drawings add होगा subtract होगा. Subtract. अरे guys, ओपनिंग कैपिटल से चालू कर रहा हूं. जो अगर पैसा 1 सेकेंड इन वॉट एवर सिनेरियो, अभी समझो अगर मैंने 1 लाख से बिजनेस चालू किया, 1 लाख मैंने कैपिटल फर्म को दिया और मेरे को 50,000 का सैलरी मिला, तो मेरा कैपिटल कितना हो जाएगा? 1.5 लाख. अभी वो 1.5 लाख में मैंने 20,000 विड्रॉ कर दिया, मेरा कैपिटल कितना हो जाएगा? 1,30,000. तो सब्ट्रैक्ट ही करना ना. सो माइनस ड्रॉइंग्स. तो ओपनिंग कैपिटल में सैलरी ऐड करते हैं, ड्रॉइंग्स सब्ट्रैक्ट करते हैं. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स माइनस. कमीशन, एडिशनल प्रॉफिट इंट्रोड्यूस्ड. एडिशनल प्रॉफिट, ठीक, एडिशनल प्रॉफिट बोल रहा हूं. कैपिटल, एडिशनल कैपिटल. एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट तो भूल ही गया, प्रॉफिट. प्रॉफिट ऐड. ये सब करने के बाद मेरे को क्लोजिंग कैपिटल मिल जाएगा. इफ आई हैव टू टेल इन वेरी 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 सिंपल वर्ड्स, जो भी पार्टनर कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट हो रहा है उसको ऐड कर दो, जो भी पार्टनर कैपिटल अकाउंट में डेबिट हो रहा है उसको सब्ट्रैक्ट कर दो. सिंपल, खत्म. एवरीवन. सो ये अभी इस प्रॉब्लम में क्या है, अपने को उल्टा करना है वर्किंग्स. क्लोजिंग कैपिटल दिया होगा, अपने को ये सब एडजस्टमेंट करके ओपनिंग कैपिटल फाइंड करना है. अभी जब रिवर्स वर्क करना है तो ये सारे साइंस क्या हो जाएंगे? रिवर्स हो जाएंगे. ऐसे ही उल्टा करना है आपको. सो इफ आई, ये मैंने क्या किया, आई स्टार्टेड विथ ओपनिंग कैपिटल एंड खाली 2 ही आइटम माइनस हुए, 2 ही आइटम माइनस हुए. ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग. बाकी सारे आइटम्स मैंने ऐड किया. यस. अगर मैं क्लोजिंग कैपिटल से चालू करता हूं सब उल्टा होगा. ड्रॉइंग्स एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स आई शुड ऐड एंड बाकी सारे आइटम्स. Am I clear? तो पहले अपने को स्ट्रेट वे सीखना है एंड फिर जब प्रॉब्लम्स करेंगे अपन पूरा उल्टा करेंगे. एनीवन हैज डाउट हियर? जो नोट कर रहे फटाफट फटाफट करो. Can I continue? Yes. So, A and B are partners.
In the ratio 3:2, the firm maintains fluctuating capital account and the balance of the same as on 31st March amounted to 160 and 140 for A and B respectively. ये जो 160 and 140 है क्या है? क्या है? These are closing capital क्योंकि ये जो बैलेंस है बैलेंस शीट डेट पे दिया हुआ है. ये जो 160 and 140 है दिस आर क्लोजिंग कैपिटल ये दिया है अपने को बैलेंस शीट डेट पे. The drawings during the year were 30,000 each. As per partnership deed, interest on capital at the rate of 10% per annum on opening balance had been provided to them. Calculate opening capital of partners given that profit was 90,000. Show your workings clearly. Okay, shall I begin? Yes. So for the partner A and partner B. For partner A and partner B. Closing capital. What is the closing capital of A? 1,60,000. And closing capital of B? 160 and 140. 160, 140. Okay. Drawings during the year were 30,000 each. Drawings को add करूँ या सब? Add. 30,000 each. Then, as per partnership deed, interest on capital. ये interest on capital add करूँ या subtract? Subtract. But भैया interest on capital तो opening balance पे find करना है और opening balance को हमको पता ही नहीं है. So we will hold this. We will hold this. Assuming that profit was 90,000. ये profit का मतलब क्या है? हाँ? नहीं. ये profit क्या profit है? कौन सा profit है ये वाला? Additional profit. ये जो profit है, this is divisible profit. सब अप्रोप्रिएशन होने के बाद ये प्रॉफिट आया. सब अप्रोप्रिएशन होने के बाद ये प्रॉफिट आया 90,000 in the ratio 3:2. Yes, calculate and tell me 90,000 in the ratio 3:2. $54,000. अच्छा ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की जगह लिख दिया. प्रॉफिट ऐड करना सब्ट्रैक्ट. Subtract 54,000 and 36,000. बस इतने ही एडजस्टमेंट्स हैं. और क्या है? कहाँ दिया है क्वेश्चन में? लास्ट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% है. इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स थोड़ी दी. That's all. So अगर ये सब मैं एडजस्टमेंट कर लूंगा तो मेरे को ओपनिंग कैपिटल मिल जाएगा. Everyone. Now भैया दो नंबर मिसिंग है एंड दोनों नंबर एक दूसरे से लिंक्ड है. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज 10% ऑफ ओपनिंग बैलेंस एंड जब तक वो में नहीं आएगा मेरे को ओपनिंग कैपिटल नहीं मिलेगा. So what I will do everyone, opening capital I'll assume X. तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होगा? X का 10%. So can I write it as 0.1x? Yes or no? Yes. And this I'll assume Y. So ये क्या हो जाएगा? 0.1 Y. ठीक है, ये क्वेश्चन का हो गया. अभी थोड़ा मैथमेटिक्स. So 1,60,000 plus 30,000 minus 0.1x minus 54,000 is equal to x. ये 0.1x को उस साइड शिफ्ट करता हूं तो क्या हो जाएगा? 1.1x और ये 1,60,000 plus 30 190 244. Oops, sorry 190 144 नहीं होगा. 190 190 244 190 244 190 244 190 244 190 244 190 244 190 244 190 244 190 244 190 244 190 244 190 244 190 244 190 244 190 244 190 244 190 244 190 244 190 244 190 244 190 244 190 244 190 244 190 244 190 244 190 244 190 244 190 244 190 244 190 244 190 244 190 244 190 244 190 244 190 244 190 244 190 244 190 244 190 244 190 244 190 244 190 244 190 244 190 244 190 244 190 244 190 244 190 244 190 244 190 244 190 244 190 244 190 244 190 244 190 244 190 244 190 244 190 244 190 244 190 244 190 244 190 2
146. 146. 6. पक्का ना? 36. एक सेकेंड. हाँ, 136. ये 190 होता है एंड हाँ यस 136. So x 136 divide by 1.1. Please calculate and tell. 636. Huh? 1,23,600 minutes. 1,23,636. 636. एक सेकेंड रुको. ओके सो नाउ यहाँ पे एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है बिटवीन टेक्स्ट बुक आंसर एंड माय आंसर. मैंने क्या अज्यूम किया, ये जो प्रॉफिट दिया हुआ है वो कौन सा प्रॉफिट है? टेक्स्ट बुक दे हैव अज्यूम दैट इट इज नेट प्रॉफिट. टेक्स्ट बुक में ये अज्यूम किया है कि इट इज नेट प्रॉफिट. उसका भी सोल्यूशन मैं आपको दूंगा. फर्स्ट यू कैन राइट assumption that profit is divisible profit. ये वाला पहले सोल्यूशन लिख लो. आई विल गिव यू द अल्टरनेटिव सोल्यूशन आल्सो जस्ट टू मैच विथ योर टेक्स्ट बुक आंसर. एंड सिमिलरली आपको y का फाइंड करना सेम इक्वेशन सॉल्विंग करके. Can I continue? Everyone? Now, next assumption, what I'll have that profits are, the profit which is given in the question is net profit. So, alternatively,
assuming, alternatively, I am assuming profit given is net profit. Alternatively, I will assume that profit which is given in the problem is net profit. In that case, how the problem will look like. So A and B and closing capital. So what is the closing capital? 160 and 140. उसमें no change. 160 and 140 उसमें no change. Then plus drawings उसमें भी कोई change नहीं. 30,000 each उसमें भी कोई change नहीं. Then Interest on capital. Minus. interest on capital. So minus interest on capital वो हमको अभी भी नहीं पता. फिर माइनस प्रॉफिट. अभी ये चेंज होगा. ये लास्ट प्रॉब्लम और इस प्रॉब्लम में सेम नहीं है. ये लास्ट प्रॉब्लम और इस प्रॉब्लम में सेम नहीं है. क्यों सेम नहीं है? लेट मी शो यू. नाउ क्लोजिंग कैपिटल, ये जो मैं कर रहा हूं बोथ पार्टनर्स का मिला के कर रहा हूं. दोनों पार्टनर का मिला के क्लोजिंग कैपिटल कितना है? 3 lakh. 3 lakhs. देन ड्रॉइंग्स इसमें ऐड करो. 60,000. So एक सेकेंड. हाँ, एंड प्रॉफिट इधर माइनस करो. दोनों पार्टनर का मिला के प्रॉफिट कितना होता है? 90,000. ना भैया, ये जो 90,000 का प्रॉफिट है इसमें से ही अप्रोप्रिएशन होगा. यस और नो? ये जो 90,000 है इसमें अपन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे. यस और नो? यस. एंड 90,000 में से लेट्स अज्यूम कि 10,000 है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. बाकी का 80,000 अपन क्या करेंगे? डिविजिबल प्रॉफिट अपन रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे. यस और नो? यस. तो मैंने यहाँ पे क्या किया? दिस माइनस प्रॉफिट एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. ये 90,000 जो है इसमें थोड़ा अमाउंट होगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और बाकी का अमाउंट होगा प्रॉफिट. तो मेरे को ओपनिंग कैपिटल मिल जाएगा. हाउ मच? 2,70,000. एवरीवन 2,70,000 ये मेरा ओपनिंग कैपिटल है. तो इसमें मेरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना होगा? क्वेश्चन में दिया होगा. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा 10%. सो 27,000. अभी टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मेरा 27,000 है. इसको मैं क्या रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना? ए का कितना है, बी का कितना है? वो तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है. जरूरी नहीं. एवरीवन लुक एट द क्वेश्चन. इनका कैपिटल है 1,60,000 and 140. Is this in the ratio 3:2? No. Then how do we go ahead? 8:7 का क्या लॉजिक है? 1,60,000 into 1,40,000. यही वाला पार्ट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है. एवरीवन रीड द क्वेश्चन वंस अगेन. आराम से इसको पढ़ो.
मैं आपको और ज्यादा नहीं घुमाऊंगा बिकॉज ऑलरेडी बहुत बहुत ज्यादा हो गया है. सो भैया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वी गॉट 27,000 एवरीवन. एंड इधर देखो मैंने क्या लिखा, प्रॉफिट एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला के 90,000 है एवरीवन. प्रॉफिट एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोनों मिला के 90,000 है. अगर उसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 27,000 है तो प्रॉफिट कितना होगा? 53 63,000. अभी ये 63,000 प्रॉफिट क्या है? वेरी गुड, डिविजिबल प्रॉफिट. ये जो 90,000 था ये नेट प्रॉफिट था. इसमें 27,000 अप्रोप्रिएट हो गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. बाकी का जो अमाउंट बचा 63,000 वो है डिविजिबल प्रॉफिट. कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा? 3:2 रेशियो. 63,000 इन द रेशियो 3:2. 37,800. आप कैलकुलेटर यूज कर रहे हो या हाँ? 37,800 एंड 25,200. ये भैया इतना भारी भारी मैथ्स है. ओके, सो ये मिल गया. आफ्टर एडजस्टिंग ऑल दिस व्हाट वी विल गेट? तो प्रीवियस प्रॉब्लम एंड इस प्रॉब्लम में क्या फर्क है? खाली प्रॉफिट का. इफ यू सी प्रीवियस प्रॉब्लम भी मैंने सेम अप्रोच ही किया था. सो आई विल कीप ओपनिंग कैपिटल एज एक्स एंड वाई. इधर क्या होगा? 0.1x y. Again we have to solve this. So 1,60,000 plus 30,000 minus 0.1x minus 37,800 is equal to x. x को उस साइड अगर शिफ्ट करता हूं 1.1x एंड इधर 152,200. Correct? So x is equal to 152,200 divided by 1.1. यस गाइस, ये सब एग्जाम में आपको कैलकुलेट करना है तो अभी से आदत डालो. गलत आंसर आए तो भी चलेगा, एटलीस्ट कैलकुलेट करके बोलो. आई एम अ फर्म बिलीवर, जब स्टेट बोर्ड में कैलकुलेटर अलाउड है सीबीएसई में क्यों नहीं? One 152,200 divided by 1.1, 138,363. ये है आपके टेक्स्ट बुक का आंसर. 138,363 ये है आपके टेक्स्ट बुक का आंसर. तो मैंने आपको दो आंसर दिखाए गाइस. अभी जब भैया ब्लंटली प्रॉफिट दिया है तो क्या अज्यूम करना भैया? टेक्स्ट बुक वाला राइट है या हमारा राइट है? दोनों ही करेक्ट है. When they have given bluntly profit, they have been bluntly खाली प्रॉफिट दिया है भैया, तो कैसे अज्यूम करना कि डिविजिबल प्रॉफिट है या नेट प्रॉफिट? मैंने आपको दोनों बोल दिया भैया. एग्जाम में आए तो फॉलो टेक्स्ट बुक सेकेंड वाला. अगर एग्जाम में आ गया तो अज्यूम नेट प्रॉफिट है एंड अकॉर्डिंगली डू. एवरीवन, फर्स्ट ऑल्टरनेटिव आई थिंक आप लोगों ने ऑलरेडी लिख लिया है. सेकेंड ऑल्टरनेटिव 27,000 हमको आयु से मिल गया था, तो इसका 3/2 नहीं है. 27,000 का 3:2 रेशियो. अपन नहीं, आईओसी इज डिपेंडेंट ऑन ओपनिंग कैपिटल. ठीक है, सो आप पहले लिखो, मैं बोलता हूं.
4 more questions and I'll leave you for the day. ये टॉपिक खत्म हो जाएगा, कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल. अंडरस्टैंड, बहुत भारी टॉपिक है. But if anyone did not understand, let me know, I'll explain again. नहीं समझ में आया? कहाँ से? ये 270 तक समझ में आया? दोनों पार्टनर का मिला के ओपनिंग कैपिटल 270 है, ठीक है. तो दोनों पार्टनर का मिला के अगर ओपनिंग कैपिटल 270 है तो 270 पे 10% विल बी आईओसी. तो बाकी का 63 नेट प्रॉफिट, सॉरी डिविजिबल प्रॉफिट, एंड वो प्रॉफिट हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है. नाउ अभी आपका डाउट नील, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 27,000 है, आप क्या बोल रहे हो, कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना? जो ऊपर ये रेशियो दिया 3:2 प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. आप एक बार बोलते भैया 160 एंड 140 तो भी मैं मान लेता, बट 160 एंड 140 क्लोजिंग कैपिटल है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो ओपनिंग कैपिटल है. इंटरेस्ट 27,000 मिल गया ना इंटरेस्ट. हाँ हाँ, तो इधर IUC में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का कोई कनेक्शन नहीं है. कैन आई कंटिन्यू? Let's assume next problem में ये सब confusion ना हो. Now following is the extract of balance sheet of Neelkant and Mahadev. ये balance sheet दिया हुआ है. During the year, Mahadev drawings were 30,000. Profit during the year ended is 10 lakh. Calculate interest on capital at 5% per annum for the year ending 31st March. Go through the question. Everyone, can we start? तो भैया पहला क्वेश्चन, जो अपने को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलता है वो खाली कैपिटल अकाउंट बैलेंस पे मिलता है या कैपिटल प्लस करंट दोनों में मिलता है? ओनली कैपिटल और कैपिटल प्लस करंट? ओनली कैपिटल, ओनली कैपिटल. सो ड्यूरिंग द ईयर महादेव ड्रॉइंग्स है 30,000 एंड नहीं दिया ड्रॉइंग्स आउट ऑफ कैपिटल या ड्रॉइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट. वी विल अज्यूम ड्रॉइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट. तो ये कैपिटल में इफेक्ट करेगा? नहीं. प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर 10 lakhs. दिस विल इम्पैक्ट करंट अकाउंट या कैपिटल अकाउंट? प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर 10 लाख. गाइस मैंने यस्टरडे की क्लास में बोला अगर कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट है मतलब फिक्स्ड कैपिटल मेथड. फिक्स्ड कैपिटल मेथड, उसमें कैपिटल फिक्स होता है. जो भी प्रॉफिट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, जो भी आपको चार्ज करना है आप कहां पे चार्ज करोगे? करंट अकाउंट. यू विल चार्ज इन द करंट अकाउंट. सो ये अपना फिक्स्ड कैपिटल मेथड है, ठीक है. तो ये प्रॉफिट से कैपिटल चेंज होगा? नहीं. हाँ या नहीं? सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वेरी वेरी सिंपल. नीलकांत का 10 lakhs है, उस पे 5% 50,000. और ये सेकेंड कौन है? महादेव. सेम कैलकुलेशन, खत्म, प्रॉब्लम ओवर. इतना बड़ा प्रॉब्लम भैया, सोचा कुछ ऐसे दमदार सोल्यूशन होगा. वो बोलते हैं ना डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर. करेक्ट ही बोला ना?
Done? Yes, let's continue. 3 more problems and I leave you. Pakka. But 3 problems, please be alert. From the following balance sheet of long and short, calculate interest on capital at 8% per annum for the year ended 31st March. So long capital they have given, short capital they have given, general reserve, fixed asset and other asset. During the year, long withdrew 40,000, short withdrew 50,000. ये 40 and 50 क्या है? Drawings. And looking at the question, आपको क्या लगता है? Fixed capital है या fluctuating? Fluctuating. कि only capital is given, otherwise current account भी दिया होता. So here it is fluctuating. Profit for the year ending was 1.5 lakh, out of which 1 lakh was transferred to general reserve. Now, ये जो capital है, ये closing है या opening है? क्लोजिंग. तो इस पे सीधा 8% कैलकुलेट कर ले, सोल्यूशन मिल जाएगा अपने को. ओपनिंग कैपिटल एंड अगेन भैया सेम प्रॉब्लम जो हमको था, ये प्रॉफिट ये 1.5 लाख है, ये नेट प्रॉफिट है या डिविजिबल प्रॉफिट? ये क्लियरली क्वेश्चन में दिया हुआ है. इस क्वेश्चन में एम्बिग्यूटी नहीं है क्योंकि इसमें लिखा है 1.5 लाख का प्रॉफिट हुआ है जिसमें 1 लाख जनरल रिजर्व में ट्रांसफर किया. So this 1.5 lakh is net profit. So हमको यहाँ पे कुछ भी assume करने की जरूरत नहीं है. Question is very clear. How we will start? Come on, step by step. You are going to tell me. Closing capital. So particulars or long and short. And I'll start with closing capital. Long का कितना? 1,50,000. Short. Then Drawings. क्या करूँ? Drawings. Yes. Very good. I want everyone to participate. Drawings. 40,000 and 50,000. Next. Minus interest on capital. Question में नहीं दिया है, तो we what will write? 0.08 x and इधर 0.08 y. फिर Minus profit. माइनस प्रॉफिट. प्रॉफिट नहीं दिया हुआ है तो अपने को क्या करना है? डिवाइड करना है. एक डिटेल वर्किंग नोट करना है. सो नाउ टोटल. नाउ व्हाट इज द टोटल क्लोजिंग कैपिटल? 1,20,000. 1 lakh 20,000. 2 lakh 60. Madam, 120 and 140. 2 lakh 60. Add drawings. 90,000. Drawings 90,000. Add drawings 90,000. फिर if you add you will get 3 lakh. एक सेकेंड, प्रॉफिट भी तो है इधर. 150 में 1 लाख तो जनरल रिजर्व में गया, उसको भूल जाओ. अच्छा. उसको भूल गए. बाकी 50,000. 50,000. ये 50,000. What and what? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड प्रॉफिट. इसको प्लस करना, माइनस. तो अपने को क्या मिलेगा? का 3 लाख. ये 3 लाख क्या है? डिविजिबल प्रॉफिट. प्रॉब्लम क्या बोलते हैं? मदर सिस्टर कर दिया. ये कम ऑन गाइस, ये ओपनिंग कैपिटल अपन फाइंड कर रहे हैं. सो वी आर स्टार्टिंग विथ क्लोजिंग. ये लेफ्ट साइड वाला जो है ना, वही राइट साइड में भी लिखा है. तो क्लोजिंग कैपिटल में ड्रॉइंग्स ऐड करोगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड प्रॉफिट माइनस करोगे, यू विल गेट ओपनिंग कैपिटल. तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना होगा? 3 लाख पे 8% 24,000. अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 24,000 है तो प्रॉफिट 26,000.
26,000 दोनों मिला के 50,000 रहना एवरीवन सेम जो मैंने पहले प्रॉब्लम में किया सेम मैं रिपीट कर रहा हूं दोनों पार्टनर का मिला के 260 ड्रॉइंग्स ऐड किया ये माइनस किया तो ओपनिंग कैपिटल 3 लाख आया 3 लाख पे 8% 24 बाकी का प्रॉफिट अभी ये जो प्रॉफिट है मैं कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करूंगा लकीली कुछ नहीं दिया सो इक्वल यहाँ 13,000 हाँ now x and y चलो now let's solve so 1,20,000 plus 40,000 minus 0. एक जीरो एक्स्ट्रा डाल दिया हाँ नहीं ना minus 0.08x minus 13,000 is equal to x तो इसको उस साइड शिफ्ट करूंगा तो 1.08x 147 so x is 1,47,000 divided by 1.08 136,111 बट क्वेश्चन में ओपनिंग कैपिटल पूछा है क्वेश्चन में पूछा क्या है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पूछा है तो इसका 8% 10,889 सेम वे आपको y का करना है विच आई एम नॉट डूइंग अननेसेसरी लेंथी कैलकुलेशन yes copy quickly ऐसे लगता है आपको घर जल्दी जाना ही नहीं है मैंने बोला जैसे 2 और प्रॉब्लम खत्म होगा मैं भेज दूंगा सब इतने आराम से लिख रहे हैं Can I continue? Yes. समझ में आ रहा है ना कौन बुलाया हाँ हाँ दिख रहे हैं ना अभी भी एवरीवन डन Yes. So now we'll move to the next problem, problem number 31. Amit and Bramit started business with capital 15 lakh and 9 lakh respectively.
1st October, they decided that their capital should be 12 lakh each. Necessary adjustment were made by introducing or withdrawing by check. Interest on capital 8%. Compute interest. बहुत simple है. Interest on capital. Amit. Yes, how will you calculate? For 6 months. हाँ, first 6 months का कैसे calculate करोगे? 15 lakh into 8%. Perfect. And then 9 lakhs. 9 lakhs ये यो. 12 lakhs. उसके बाद उन्होंने डिसाइड किया 12 lakhs होना. They decided that their capital should be 12 lakhs each into yes 60,000. 60 and 48,000. I am going by you. मैं तो ऑलरेडी पहले ही बोला मैथ्स में बहुत वीक हूँ. 1,08,000. 1,08,000. Next partner Bramit. Next partner Bramit. Yes, tell me. 6 by 12. हाँ. And 12 lakhs into second one I'll tell. First one please calculate. $36,000. Add both. 74. नहीं 84. 84. Yes. Come on, guys. One more problem. Yes, sir. Can we continue? Yes, sir. Now the last problem for the day. Molly and Goli contribute 20,000 and 10,000 respectively. They decide to allow interest on capital, respective share in the profit they have given, and profit for the year 1,500. So interest on capital, Molly 20,000 into 6% कितना होता है? 1,100. And Goli 1,600. 10,000 into 6%. 6,000. Total कितना profit है? नहीं. What we will do? His profit is going to divide. 1,500 is the profit. We will divide in the ratio. 1,200 is to 600. That is 2:1. 2:1. So Molly 1,500 into 2 by 3 and Goli 1,500 into 1 by 3. 1,500. First वाला हो गया. Second, when there is no agreement that the interest on क्या ये रेशियो में करना है ना. 2 by 5 कैसे आएगा? Sharing profit. हाँ? ये वाला रेशियो बोल रहे हो. ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है. Now, second part, when there is an agreement that interest on capital is a charge, क्वेश्चन ही गलत है. ये मैंने लास्ट क्लास भी बोला था. Interest on capital can never be charged. It is always a profit. Yes, copy quickly.
Done? Yes, sir. I am leaving you 7 minutes early today.